Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you guys. Depends what time you're watching my video. Today we are going to cook चिकन कढ़ाई देसी अपना स्टाइल। तो इस चिकन को बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले चिकन 1 किलो 1000 gram. So on my machine you can see 970 gram. Almost it is going to be 1000 gram, but you make it 1000 grams. 1 kilo chicken. Then you need chaat masala 2 tablespoons. Then you need zira 1 tablespoon. Coriander dry 1 tablespoon. And salt you need 1 teaspoon. Garam masala, this is the mixture of spices you can find in the Asian shops. तो ये आपको चाहिए 1 teaspoon. Kasuri methi you can find in the Asian shops, 1 teaspoon. This is the bay leaf. Curry patta एक काफ़ी है, just one. Now you need fresh things to cook the कढ़ाई. Green chili fresh 7. 2 tablespoon fresh chopped coriander. Lessons, garlic paste 2 tablespoon. Ginger paste 2 tablespoon. Ginger chopped in long size 2 tablespoon. Lemon juice 2 tablespoon. And cooking oil, I have 2.5 cups now. So this is the tomato, you can see 6 tomato you cut in the pieces, large pieces. This is what you require for karai. Okay guys, spices को measure करने के लिए, for the measurement of spices, these are the spoons. Okay. I roast this properly, and when it is dried, then we are going to grind this and use for cooking. And it is done. Just put it in the cup and we are going to grind this. Okay guys, put in the grinder cup and just make it tight and grind. So this is done. Just put in the cup. So we use for cooking now. Okay guys, चूल्हे पे अंडी रख लें, उसमें ऑयल डाल लें, मिनिमम 2 कप डालें और ऑयल को गर्म होने दें। थोड़ी आंच तेज़ कर लें और ऑयल को गर्म होने दें। जो ही ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें चिकन डाल लें। चिकन डालने से पहले हम उसमें ये मसाला डालेंगे जो ज़ीरे वाला है, और थोड़ा सा भूनेंगे और साथ में चिकन डाल लें, फिर चिकन को भूनेंगे। सो हियर यू गो। ओके, दिस पॉट इज़ लाइक दिस इन द ऑयल, और चमचा ले लें और उसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें लाइक दिस। ओके, तो गाइस ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं अभी चिकन डाल देता हूँ। चिकन को पीसेस को कट लगा दिए थे, तो उस पर चिकन अच्छा तरीके से कट गया था। और उसका ये फ़ायदा है कि पीसेस को कट लगाने से चिकन के अंदर स्पाइसेस प्रॉपर तरीके से जाते हैं, और इट इज़ काइंड ऑफ मैरिनेशन भी हो जाती है, और ऑयल भी अंदर चिकन के पीसेस में जाके अच्छी तरीके से कुकिंग करता है, जिसमें चिकन जो है कच्चा नहीं रहता। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग। इसको अभी 5 मिनट फ्राई करते हैं। 5 to 10 मिनट्स रखें, आप इसको फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ उसको लेड उतार के भूनने में, सो दैट गिव अ वेरी ग्रेट टेस्ट। ओके, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। सो मैं इसको भूनने में प्रेफर करता हूँ। सो it depends on you how you want to cook.
तो मैं इसको इस तरह घुमा फिरा मतलब कि हांडी के अंदर घुमा के इसको रोस्ट करने में प्रेफर करता हूँ। आई लाइक दैट। अभी 5 से 10 मिनट चिकन बन गया है। अभी इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे जो कि लार्ज पीसेस हैं टमाटर के, तो इनको आप इस तरह से रख दें, इस तरह से इसमें डाल दें ताकि इसकी छिलके आसानी से उतर। सो गाइस डू इट लाइक दिस, ओके। अभी just put the lid on and leave it for 5 minutes on medium to high flame. Going to remove the lid. You can see the tomatoes are tender and you can remove the skin with the help of this easily. So here you go, okay. Like this, you keep removing the skin, and then you can see the all skin from the tomato has been removed by. And now we are going to add the spices in this. Just have a look. Okay guys, we are going to put the kasuri methi, the bay leaf, the salt and the garam masala. On the low flame we are just going to mix these masalas which we have put in the dish now, and on the low flame just cook it for 5 minutes. Keep watching this. It will give you a great tasty dish today. So now put this chaat masala in and mix it. तो इसको इस तरह मिक्स करते रहें आप, ठीक है। इस तरह मिक्स करें। उसके बाद गार्लिक पेस्ट भी डाल दें, जिंजर पेस्ट भी डाल दें, उसके साथ ये जो ग्रीन चिली है ये भी डाल दें, डजंट मैटर। ओके गाइस, एंड नाउ थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लें और पकाते जाएं। स्मेल भी आ रही है और उसका एक बड़ा प्यारा सा कलर भी बन गया है। सो गाइस keep cooking for 5 minutes more and then I let you know what you have to do. Now put the lid on and just cover it for 5 minutes. We are going to check now. After 10 minutes, cooking for 10 more minutes, you can see how the chicken come up. Just have a look. It will give you a great taste. So guys, इसको इस तरह से पकाते रहें another 5 more minutes. So we are going to make it well done, and then after 5 to 10 minutes it is ready to serve. You can enjoy your meal like this and keep on the low flame for 5 more minutes. Okay, this is done. Now we are going to reduce some oil and just have a look, because too much oil is not good for health. This is almost ready. Now we are going to put the lemon juice in, the coriander, the ginger, and we are going to put the lid on like this and just for 2 minutes. Keep on the low flame, ready to serve. You can have it. Alright guys,
अभी ये रेडी है, तो इसको अभी हम मूव करते हैं। इसका लेड मूव करके just going to dish it out. Okay, a great smell and aroma is coming up. It seems very tasty, and you guys will try, you will love it, and you will appreciate my cooking. You can dish it out like this. Okay guys, like this. Guys, I forgot to say something to you. If you like my video, please subscribe to my channel, share my video, like it, and press the bell button for future opening. Look at this dish. Just for the garnishing, put little bit more coriander on the top, some fresh ginger. Also put some lemon on the top like this. You can enjoy your meal. We are finished now, and thank you very much for watching my video. Have a good time, good luck, and goodbye.